in a notepad. So now please pay attention here. So first we write insert into, is it visible to all? Or I will increase the size little bit. I think it is okay now. So insert into is a command that by which we are able to insert the record in the table, right? So insert into table name, correct? Remember, table keyword we will not use here. Insert into table we will not write. Is it clear? So we will not write the table here. Insert into directly table name. So I am passing the information into two tables. I will write two, right? Now remember, if I am not specifying the specific columns in which I am doing entries, so I can left them and I can directly write insert into is2. Now values keyword, values, values. Inside the bracket, I will write the values in corresponding order, remember, as the table order. Is it clear? So the table contains roll number, which is a primary key, first name and marks, right? So in the same order, I need to pass the values and I cannot left any column here, correct? If I left any column, the column count doesn't match, error will come. Which error? Column count doesn't match. Is it clear? So I will insert the record insert into its two values and now I will inserting like first is roll number. So roll number is my integer type. So there is no quotation required. I will write 10. Correct? First name, which is the varchar value or variable character value. So that must be inside the quotations. As a string we write in quotations, so your varchar can be written in its quotation as well. So let's see, suppose I will write Neha, comma, and the marks, let's say 98. Correct? This is my first record. If I want to enter the multiple record in a one shot, so I can put comma here and another batch, or I can say tuple I can pass there. So 102, comma, let's say Riddhi, and 85 are the marks. Correct? Another I can write 103 and I just say Advik 92. Correct? Bracket close. So I am entering three records, right? I am entering three records in the table stu, correct? In this way. So I will write this query where I can write. I'll just copy and paste it here. Is it clear? Put semicolon and press enter. So you can see here query okay. Three rows affected. Record entered three. Is it clear? What is the other way to enter the records? So I will show you the three ways to enter the record. Other way, what if I do not know the marks and I have to enter the roll number and first name at least. Marks मुझे नहीं पता है. How I can enter in that case? Because here we are not specifying the columns in which we are doing entry, so we have to enter in all column corresponding way as same as in table, right? Or I can say the same order as a table order. So now, second way to enter the, I can say records in table is that first of all, I'll just paste that one in the chat box so that you can copy it, the first one, right? How we can insert the record. We can insert single as well, and we can insert in multiple values by separating the comma. Remember, entire one tuple, yani one record first we enter, then comma, then second record in another batch, third record in this way. So insert into stu, and now I am specifying the column. So let's see, I do not know the marks. I know the first name, so I'll write first underscore name. I know the roll number as well, so I'll write roll underscore number, right? Then I'll write values. And the values now, as per the order that I have customized here, I can tailor order I have set here, right? First name and roll number. So what exactly come? First name will come first, then roll number, correct? So first name, let's suppose I will write Avas, right? And the roll number is 108, correct? Or we get 104 I will enter, correct? Because 103 we have already done. So bracket close. Now you can see what exactly the marks will get because I am not entering the data in the marks column. So you can see the default value of marks is null.
Visible? Default value of marks is null. Correct? So if default value means if you will not enter, then what system will put there? So system will by default enter the null value there. Correct? Enter. You can see one row affected. And now in this way, I am passing the record as customized I have done. Remember, in this case, you cannot pass the null value, you cannot left the column null if there is a not null applied on the column. करेक्ट. अगर कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाइड है तो आप उसको इस तरह से कस्टमाइज वे में छोड़ नहीं सकते क्योंकि नल वैल्यू नहीं जाएगी वहां पर. इज इट क्लियर? Any problem in it out? Now the another thing, how we can see the record which we have entered. Correct? अब यहाँ पर very very important चीज है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात. Now हम बीच में एक और वे ले रहे हैं या फिर एक और टाइप हम उसका एंटर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं DQL, data querying language. DQL, data querying language, because we are fetching the records now. Remember, as per the CBSE or as per Sumit Arora, CBSE and NCERT, it is giving DQL. But Sumit Arora not showing DQL. Sumit Arora putting this select statement inside the DML only. But actually, you can think DML full form is data manipulation language. By selecting and viewing the record, nothing is manipulated. So that's why select not come under the DML. Is it clear? Select not come under the DML. It comes under the DQL. But क्या होता है, CBSE है तो आप इसको DQL की जगह आप DML भी लिखेंगे तो भी CBSE सही मानेगी. और मैं एडवाइस करूंगा, अगर ऑप्शन में DQL ऑप्शन नहीं है और उन्होंने पूछा है सिलेक्ट स्टेटमेंट किसका पार्ट है और वहां DQL है ही नहीं, तो आप क्या लगाएंगे? DML. DML लगाएंगे. बिल्कुल सही. करेक्ट, क्योंकि CBSE DML मानती है कि सिलेक्ट DML का पार्ट है. करेक्ट है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? और अगर DQL दिया हुआ है तो डेफिनेटली DQL लगाइए क्योंकि डेटा क्वेरिंग लैंग्वेज का ही पार्ट है सिलेक्ट स्टेटमेंट. और नहीं दिया हुआ है तो उसमें एरर नहीं है, आप DML मार्क करिए, उसको सही माना जाएगा. इज इट क्लियर? तो सिलेक्ट को आप DML में भी रखिए और DQL में भी रखिए. ठीक. तो अभी हम देखेंगे रिकॉर्ड को देखना कैसे, हाउ वी कैन फैच द रिकॉर्ड और हाउ वी कैन सी द रिकॉर्ड विच वी हैव एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट हियर इन आवर टेबल. Correct? Because DESC will only show the structure, not the records in that. And if you want to see the records, we have to use which statement? Select statement. Now, what is the format of select? Again, I will show on the notepad first. Format, right? So, as per the format, or I can say, first we write a statement select, SELECT, right? Then we write here column name, correct? Column name or names. It may be more than by segregating by a comma. Then we write from table name, right? From table name. And again, here also I'm writing table names as well. More than one in case of join when we use. So we'll write table names. अभी अपन join नहीं पढ़ रहे हैं, but जब join पढ़ेंगे तब यहाँ पर more than one table also possible. तो अभी मैं simple table name लिख रहा हूँ. So select column name or names from table name where, and we can say condition and semicolon. Is it clear? Just example, select first underscore name from stu. Correct? Here I am not writing where condition, it is the filter. This is what? Filter. Correct? तो इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं filtering record. Filter the record. Correct? So if I am not writing the where condition, all I am talking about the all rows. Right? I am talking about all rows. Column you have filtered already because you have selected the specific column, so वही column आएगा. Record कितने आएंगे? That you have apply the filter for it. If you are not applying filter, it is for all, right? तो जहां भी filter नहीं है, बात सब records की हो रही है. Is it clear? So select first name from stu. That's one example. If the table containing more than 10 column, for example, right? So how I can write here asterisk meaning is all select. यहाँ लिख देता हूँ asterisk for
for all column select. Is it clear? Okay. Let's see. So here I write select first all वाला ही करते हैं asterisk from stu. So all column and I'm not applying the where clause here. So all records as well. See the roll number, first name, marks, all three column and all the records. Remember, see Abhas, I have not entered the marks. What system has entered? Null, because default value of marks is null. What is default value of marks is null. So if I am not entering, so here system will take null as a default. Correct? Any problem, any doubt, beta? No, sir. Okay. Now how we can apply the filters, or I can specify the column. So that query also we can see select. Let's say I just want to see the names of students. So I will write first underscore name, column name from stu, table name. So only the column will be displayed. Is it clear? Yes, sir. Now what if we select something which not exist in a table? For example, select 5 into 3. अब ये किसी टेबल का पार्ट नहीं है. I put semicolon enter. So 5 threes are 15. Are you getting my point? So that's why I have not written from table name, because this is not common a table. Is it clear? So this is, in this case, this column called as virtual column. How? Because this is not a part of table. So what we call it? Virtual column. Is it clear? And Yes. we can give a custom name or alias for it as well. To select 5 into 3 as product. You can see pro is the column name become. So it means we can apply some arithmetic calculation also over the columns, right? For example, quantity into price if I want to do somewhere. So I can do that virtually. It is not a part of table, right? It will just calculating and showing us, not storing anywhere. So here, for example, I want to see what if I add +2 in every mark, right? सपोज कोई क्वेश्चन गलत था 2 मार्क का पेपर में और सबने बोला नहीं सर ये क्वेश्चन गलत है हमको बोनस मार्क चाहिए. मैंने कहा ठीक है सबके +2 मार्क्स कर देता हूँ, राइट? पर मैं सिर्फ करके देख रहा हूँ कितना होगा. करेक्ट, कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ करके देख रहा हूँ. आई एम जस्ट व्यूइंग इट कि व्हाट इफ आई डू द +2. I am not upgrading the marks right now. I am just viewing the marks, right? So I can say select marks +2 as upgraded marks from stu. Why I am writing here from stu? Because marks is a column who belongs to stu table. Is it clear? That's why in that case I have to write stu कि वो जो आया marks column है उसका reference क्या है तो stu table का. Now see. So now upgraded marks is, you can see 98 plus 200. I can show the both columns, right? Marks, comma. So this is the actual marks, and this is what if I add +2. So this is upgraded marks, right? But actually it is not changing the data. It is just displaying me कि +2 अगर आप करोगे तो क्या रिकॉर्ड बनेगा. एक्चुअल डेटा नहीं बदल रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं अभी भी सिलेक्ट if I do select marks from 2, so it remains same. There is no change there. Correct? Because I'm not upgrading the records. I am just seeing that if I do +2, what is the result? Is it okay to all? So Yes, here sir. in this Yes, sir. case, this column known as virtual column. Which column? This one. Because this column is not a part of table physically, right? This column is a part of table. ये column generated column है, run time generated column है, तो इसलिए हमने इसको virtual column बोला. क्या बोला? Virtual column.
Is it okay? Sir, so any modification would count in the virtual column, No, I'm not modifying anything. but like, yeah, you did marks plus two. हाँ, so it just viewing, I'm just viewing it कि what if I add two Acha. marks, Okay. right? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं बदल रहा है, Okay, राइट? sir. रिकॉर्ड कैन बी चेंज Sir, ओनली बाय अपडेट। ये सिर्फ sir, हमें can we use ये सिर्फ this? हमें शो कर रहा है कि अगर हम मार्क्स में +2 करेंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा। यस बेटा, एनीवन? Sir, can we use this virtual table as reference in some other case? Can we refer हाँ, back to this हाँ, virtual? +2 वी कैन ऐड फर्दर, राइट? एक्चुअली होता क्या है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव द क्वांटिटी एंड प्राइस, लेट्स से प्रोडक्ट टेबल इज देयर एंड आई हैव क्वांटिटी एंड प्राइस, करेक्ट? अब मुझे टेबल में टोटल को सेव करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? सोचो। क्योंकि मुझे जब भी टोटल देखना होगा मैं क्वांटिटी प्राइस का मल्टीप्लाई करके देख लूंगा। उसको टेबल में सेव करके उसकी जगह क्यों ऑक्यूपाई करवानी है, राइट? Yes. आर यू गेटिंग? तो मुझे जब भी चाहिए मैं बोलूंगा सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू प्राइस एज टोटल फ्रॉम प्रोडक्ट, करेक्ट? क्वांटिटी और प्राइस टेबल में स्टोर्ड है, तो उस पर हम ऑपरेशन लगा के देख सकते हैं। तो हम टेबल में वही चीज स्टोर रखते हैं जो हमारा एक्चुअल डेटा है, उस पर ऑपरेशन लगा के आप रिजल्ट देख लीजिए ना। ऑपरेशन रिजल्ट को मतलब ऑपरेशन करके उसमें सेव करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, आई डोंट थिंक सो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. और अच्छा, जब हम इंसर्ट करेंगे तो रिकॉर्ड हमें किससे लेना है? यूजर से लेना पड़ेगा। अब उसने गलत मल्टीप्लाई करके लिख दिया अगर, तो गलत ही आएगा। लेट सिस्टम हैंडल इट, जितने ऑपरेशन है सिस्टम को करने दो। अगर क्वांटिटी इंटू प्राइस 100 इंटू 4 सिस्टम और यूजर ने 300 एंटर कर दिया, तो सिस्टम तो 300 ले लेगा इंसर्ट के टाइम पे, क्योंकि इंसर्ट तो आप कर रहे हो ना वैल्यू, वो मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना इंसर्ट कर रहा है। तो लेट ऑपरेशन, लेट द एक्चुअल कोर वैल्यू शुड बी एंटर्ड इन दैट, एंड उसको फैच करके उसका प्रोडक्ट आने दो। इसलिए सारे कैलकुलेशन हम सिलेक्शन में करते हैं, करेक्ट? कोर डेटा, प्योर डेटा हम किस में रखेंगे? टेबल में रखेंगे। उस पर ऑपरेशन जो लगाने हैं वो सिलेक्शन पे आ जाएंगे, करेक्ट है? Yes, sir. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं फिल्टर की तरफ। इस तरह से हमने देख लिया क्योंकि हम सिलेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन व्हाट इफ आई वांट टू सी ओनली द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 101, ओनली दैट, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट, सिलेक्ट मार्क्स। अच्छा, पूरा रिकॉर्ड देखना है तो सिलेक्ट, कॉलम सारे देखने हैं तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टू, एंड नाउ आई विल राइट फिल्टर के लिए क्या करेंगे, वेयर, वेयर जहां पर roll underscore, it's a underscore or only roll number? Let me see the underscore. Okay, roll underscore number. So roll underscore number equal to 10. What exactly this query say? Select करो उन सारे रिकॉर्ड्स को, उन सारे कॉलम्स को, और उस रो को जहां पर रोल नंबर क्या है, 101 है। रो वही वाली आई, सी, करेक्ट? रोल नंबर 1, the name is Neha and marks is 98. Is it clear? Sir, Yes. Yes, but any doubt? no, sir. Okay. So select asterisk from is 2 where roll number equal to 101, and I can apply some more filters on it. जैसे I want to find out the name of the students whose marks less than I can say less than 90. What should be my query? Select asterisk from stu, table name, filter where marks, what I can write, less than 90. Clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, I can use a range also. I want to see whose marks is between, I can say 70 and 80. Correct? Yeah, 70 and 90. So I think the range is just
retrieve the data. Okay, 98 we have, 85 and okay, so we will find out 70 to 95 के बीच में किसके मार्क्स है. So you can just write select asterisk from stu where marks. Now we'll use some new, I can say the keyword here, between. Remember this keyword. If you do not want to use between keyword, you can manually write it between where marks greater than 70 and marks and, right, remember the operation and or not, right? So we'll write a and the end and marks less than 95. इसका क्या मतलब हुआ? मार्क्स 70 से ज्यादा और मार्क्स 95 से कम. Clear? Any confusion, any problem? No, sir. So this we can use, and by using between also we can use. So between can directly work. So there is no operation required, where and required only. So where marks between 70 and 95. Correct? Remember both this between operation is 70 and 95 inclusive in that. करेक्ट. कई बुक में मुझे नहीं पता ऐसा क्यों दिया है, उसमें लिखा हुआ है बिटवीन. बिटवीन में जो आप वैल्यूज पास करते हैं वो एक्चुअली इंक्लूसिव नहीं होती, मोर देन दैट, यानी 71 आएगा और उधर 94 आ जाएगा. तो 70 यहाँ पर इंक्लूसिव है, 95 भी इंक्लूसिव है. अगर आपको इनको एक्सक्लूड करना है तो आपको इस क्वेरी पे जाना पड़ेगा. यहाँ पर मैंने इक्वल टू यूज नहीं किया, रिमेंबर, आई हैव नॉट यूज इक्वल टू. And if I want to use equal to where marks greater than equal to 70 and marks less than equal to 95, then 70 and 95 both are inclusive in that. Is it clear? तो बिटवीन में बाय डिफॉल्ट इंक्लूसिव ही है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने करके देखा है, ऐसे ही चलता है. ठीक है. आई विल पेस्ट द क्वेरी सो दैट आपके पास एक एग्जांपल हो करने के लिए. ठीक है. कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है. अब एक तो बिटवीन हो गया. सिलेक्शन हम बहुत सारे तरीके जितने भी हैं वो सब कर लेंगे, सारे ऑपरेशन लगा के. अब कुछ जो अलग अलग चीजें हैं, एक्स्ट्रा हैं, वो मैं बताता हूँ. राइट. फॉर एग्जाम्पल हैंडलिंग नल. हाउ वी कैन हैंडल द नल रिकॉर्ड्स, राइट. So to handle the null records, we should use is operation here, right? So जैसे अब sometime, जैसे for example लिखो एक query यहाँ पर एक asterisk from stu. So please write one query. I want to see the records of the student whose marks is not entered. जिसके marks entered नहीं है उसका रिकॉर्ड देखना है मुझे. क्या लिखोगे, जरा क्वेरी लिखो चैट बॉक्स में. Okay. So Eliska, Anshul. Okay. Anyone else who has written? आकर्षा also. परफेक्ट. आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है, लेकिन ये क्वेरी गलत है. करेक्ट. देखो, नल मतलब बेटा नथिंग, कुछ भी नहीं है. सो यू कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग बाय नथिंग. करेक्ट. नल से किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता. कुछ है ही नहीं तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, राइट. आई कैन कंपेयर इट विद जीरो, ये इनिशियल पॉइंट पे. तो हम वेयर में नल का डायरेक्टली इक्वल टू के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो व्हाट वी विल राइट हियर, सिलेक्ट
एस्ट्रिक सारे कॉलम चाहिए, फ्रॉम टू वेयर मार्क्स इक्वल टू नो, राइट? तो वेयर मार्क्स इज नल, करेक्ट? तो इसको बोलेंगे हैंडलिंग नल, राइट? मार्क्स इज नल। करेक्ट। सिमिलरली मुझे उनका रिकॉर्ड देखना है जिसके मार्क्स एंटर्ड हैं, एक्सक्लूसिव, राइट? एक्सक्लूडिंग द नल रिकॉर्ड, राइट? नॉट लगा दिया, रिवर्स ऑपरेटर, वेयर मार्क्स इज नॉट नल, तो जहां मार्क्स नल नहीं है सिर्फ वही रिकॉर्ड देखें। तो नल आभास का रिकॉर्ड नहीं आया 104। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम?